Okay, so today we are going to start with the chapter 10, curvature of plane curves. It is extremely simple chapter. So first let us see what we mean by plane curve. Okay, so please note it down. Plane curve. It is denoted by C. So a plane curve C in R2 is a subset of R2 such that C is level curve of some real valued function where f is a real valued function defined on an open subset U of R2 such that the gradient of f at P is not equal to 0 for all P belong to C. So what is C? Plane curve. Okay, so plane curve क्या होता है? It is simply a subset of R2 such that C is in level curve of C where f is a real valued function, and one more condition is there. Gradient of f at P is never equal to 0 whenever you take a point on C. That means all the points of C are a regular point of f. So this is nothing but a definition of surface. So you can say that C plane curve is nothing but a one surface in R2, right? So now let us move towards curvature. Okay, so let C is equal to f inverse of C be what? Be a plane curve with orientation n. n क्या है? It is an orientation on C, right? And what you have to take? You have to take a point P on C and let CP denotes. What is CP? It is the set of all vectors tangent to C at P. It is what? It is set of all vectors tangent to C at point P. Then in the last chapter, we have studied the Weingarten map. Okay. So from there, the Weingarten map, it is being denoted by LP. So from CP to CP, it is what? We have also seen that it is linear. It is a linear transformation. It is a linear transformation on the one-dimensional space CP. What is the dimension of CP? It is 1. Okay. And what is LP? It is a linear transformation on a one-dimensional vector space. So whenever you have a linear transformation from a one-dimensional space to itself, then it is always a multiplication by a real number. That means क्या मिलेगा आपको? LP, है ना? LP of V. What it will be? It will be some real number multiplied by V, right? So let us take that some real number, denote it by K. Okay, you can, मतलब ऐसा थोड़ा सा curve है. It is not your normal K. Okay, so denote it by K. So we can have LP of V is equal to KP dot V for all V belong to CP. Okay. Then this real number KP, it is called curvature of C at P. So very simple. LP ये क्या है? It is a Weingarten map from CP to CP. But because CP
its dimension is what? 1, and LP is what? Linear. So LP will be multiplication by a real number. So call that uh, real number at KP. This real number KP, it will be called as curvature of C at P. Right? Very simple. So if V is any non-zero vector tangent to plane curve C and P belong to C, then what you will have? LP of V dot V, right? What is LP? LP is nothing but multiplication by a real number V dot V. Because KP, it is a real number, take it out, then you have V dot V. Okay, so KP, V dot V means norm of V square, right? On the left hand side, you have LP V dot V. Okay, so from here, you can have a formula for curvature. KP, it is actually small, KP, right? Because you've already taken V not to be equal to 0, this will give you norm of V, it is also not equal to 0. So you can divide both sides by norm of V square. So KP will get it as LP V dot product V divided by norm of V square. Call it as 1. This is an expression for curvature, right? But in the last chapter, previously we have studied if alpha from an interval I to C, है ना? If alpha is any parameterized curve in C with velocity vector at t not equal to 0 for all t belong to I, right? Then my theorem 1, which is given at page 57, we have, what we have? It is by theorem 1 on page 57. You can see it for reference. In the last lecture, we only have proved it. Alpha double dot t dot product with norm of, n of p, it is equal to LP V dot V, right? Call it as 2. So this expression is there in the numerator of 1. So from 1 and 2, what will get? From 1 and 2, we have Kp is equal to, replace this LP dot V as alpha double dot P NP divided by norm of V. Okay, norm of V square. So let us take that V as alpha dot T. So it is equal to what? Where V we have taken as alpha dot T because it is not equal to 0. Right? So if we take P as alpha T, we will have alpha double dot T N at alpha T divided by alpha dot T square, or you can also write it as K composite alpha at T. It is equal to scalar N composition alpha at T, or you can simply write N of alpha T divided by alpha dot T square. So this is the expression for curvature. You have to remember that. Okay. अगर आपका अल्फा यूनिट पैरामीटराइज्ड कर्व है, मींस व्हाट? इफ अल्फा dot t it is equal to 1, then you will have Kp as alpha double dot t n of alpha. Okay, now we will see what is meant by local parameterization. Very important topic. Local parametrization. Okay, so for that, let C be a plane curve. That is what? C is a one surface in R2 and P be a point on C. Okay. So by a
local parameterization of C containing P, we mean लोकल पैरामीटराइजेशन का मतलब क्या होता है? अ पैरामीटराइज्ड कर्व. वी मीन अ so local parameterization is nothing but a parameterized curve alpha from I into C such that you have certain condition. Alpha is irregular. Alpha is regular means what? Alpha dot t, it is not equal to 0 for all t belong to pi. Second condition, alpha is oriented consistently with C. Now, what does it mean? That is such that for each t belong to I, the basis alpha dot t for C alpha t is consistent with the orientation n of C, and the last one t belong to image of alpha. So simply local parameterization क्या होता है? ये parameterized curve होता है from an interval I to C which has these three property. Alpha is regular, alpha is oriented consistently with C, and then the point P which you have taken on C, it belong to image of alpha, right? So if these three properties are satisfied, alpha will be called as what? Local parametrization. Okay. Moreover, if you see that alpha is on 2, that is what? It means that image of alpha, if it becomes equal to C, then alpha is now called global parameterization. Okay. So now we will see what are the steps to find parameterization. So the first of all, आपको क्या करना पड़ेगा? The first thing you should do, देखो C क्या है आपका प्लेन कर्व. प्लेन कर्व किसमें दिया आपको? It is given in terms of your function where f is what? It is a real valued function. Okay, f क्या है आपका? It is a real valued function. Okay. Now what will happen? आपको पहले क्या करना पड़ेगा? First thing you should do is you find gradient of f, that is grad f. Agree? So gradient of f आपको कैसे दिया जाता है? Gradient of f at p, it is nothing but a vector at p, derivative with respect to first coordinate being evaluated at p, partial derivative with respect to second coordinate being evaluated at p. Okay, so in the second step, तो अभी आपको पता है कि ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ये क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है. कहाँ पे? सीपी पर. ओके, तो अब ये क्या अब आपको क्या करना है? आपको टैंजेंट वेक्टर फील्ड चाहिए. ये क्या है? ऑर्थोगोनल है. ग्रेडियंट ऑफ एफ या क्या है? इट इज ए ऑर्थोगोनल वेक्टर फील्ड. ओके, अब आपको क्या चाहिए? इस ऑर्थोगोनल वेक्टर फील्ड से आपको क्या चाहिए? टैंजेंट वेक्टर फील्ड्स. ओके, ये ऑर्थोगोनल है, इससे आपको टैंजेंट चाहिए. तो आप क्या करो ना, आपका जो वेक्टर फील्ड है उसको रोटेट कर लो थ्रू एन एंगल -π/2. So in the second step, you have to rotate gradient of f through an angle -π/2. और अब जो आपको वेक्टर फील्ड मिलेगा हम उसको x से डिनोट करेंगे. ओके, तो ये कैसे मिलेगा आपको? नाउ x cube, it will be what? It will be a vector field
क्योंकि आपने इसको रोटेट किया है, अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे विल बी फर्स्ट partial derivative with respect to second coordinate and minus times partial derivative with respect to first coordinate being evaluated at a q. और आपको स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में व्हाट वी डिड इन द सेकंड चैप्टर, यू हैव टू गो बैक. अब आपके पास टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड का आपको फाइंड कर लेना है इंटीग्रल कर्व. वहां पे हम ओडीई सॉल्व करते थे, अगर आपको याद होगा. इंटीग्रल कर्व फाइंड कर लेना है अल्फा. अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू x1t x2t. ओडीई सॉल्व करोगे आपको x1 x2 मिल जाएगा. तो ये जो अल्फा टी होगा ये आपका लोकल पैरामीटराइजेशन होगा. अगर आप अल्फा ऑफ टी इसको पॉइंट पी से पास करोगे, दैट मींस इफ यू फाइंड मैक्सिमल इंटीग्रल कर्व such that alpha of 0 is equal to p, then your parameterization will become what? Global parameterization. वेरी सिंपल. तो पहले आपको क्या करना है, ग्रेडियंट एफ फाइंड करना है, फिर इसको रोटेट करना है थ्रू एन एंगल -π/2, तो आपको मिलेगा एक्स, और एक्स से आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा. ओके, तो वी आर गोइंग टू सी एग्जाम. सिर्फ लोकल पैरामीटराइजेशन या ग्लोबल पैरामीटराइजेशन आपसे पूछा जाएगा तो वो 5 मार्क्स का होगा. अगर उसके साथ एडिशन में कर्वेचर भी पूछा गया देन इट विल बी फॉर 7 मार्क्स. ओके, और 8 मार्क्स whatever. So your question is find the global parameterization and curvature. मतलब ये 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन of the circle. Circle is a plane curve. x1 minus a square plus x2 minus b square, it is equal to r square. तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको प्लेन कर्व लिखते हैं. प्लेन कर्व हम कैसे लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ सी. तो उसके लिए आपको एफ चाहिए. सो लेट अस डिनोट आवर एफ एज एफ ऑफ x1 x2 एज x1 minus a square plus x2 minus b square. And because you have your circle as equal to r square, we will see that c is f inverse of r square, where r is not equal to 0. Or you can say r is greater than 0. Right? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, we have to assume that c is oriented by outward normal. अब देखो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है, ये देखो आपका सर्कल है ना. इट इज बीइंग ओरिएंटेड बाय आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब आपका वेक्टर फील्ड ऐसा है, राइट. इनवर्ड नॉर्मल बोलता मतलब आपने अंदर लेना होता है सारे जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं. तो आउटवर्ड नॉर्मल अगर n है तो इनवर्ड नॉर्मल क्या हो जाएगा, -n. तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको आउटवर्ड नॉर्मल बोला है, प्लीज टेक इट एज n इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन नॉन ग्रेडियंट ऑफ f. इनवर्ड बोला है तो यू टेक माइनस ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन नॉन ग्रेडियंट ऑफ f. ये इनवर्ड है और ये क्या है, आउटवर्ड. ओके, सो लेट p इज इक्वल टू x1 comma x2 belong to R. Then gradient of f at p, it will be equal to p comma 2 x1 minus a to x2 minus b. राइट. आप ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू रोटेट थ्रू एन एंगल -π/2. तो आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट tangent vector field. ओके, सो लेट अस राइट इट एज xp. अभी हमने देखा था ये क्या हो जाएगा, डायबा f अपॉन डायबा x2 एट p एंड देन माइनस डायबा f अपॉन डायबा x1 एट p. तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, सो वी विल राइट p 2 टाइम्स x2 माइनस b कॉमा -2 टाइम्स x1 माइनस a. ये हो गया आपका xp, राइट. ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपको वेक्टर फील्ड मिला है टेंजेंट वेक्टर फील्ड, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है ना. So to find a local parameterization C, we must find
maximal integral curve of this vector field xt. Suppose alpha, then let alpha be a integral curve of what? Xp. By definition of integral curve, what you will have? Alpha dot of t, it will be equal to x of alpha t. तो पहले अल्फा टी देख लो. अल्फा टी क्या होगा? इट विल बी x1 t कॉमा x2 t. अल्फा डॉट टी क्या हो जाएगा? इट विल बी अ वेक्टर एट अल्फा टी. डेरिवेटिव लेना है ना. तो डेरिवेटिव क्या हो गया? dx1 अपॉन dt एंड देन dx2 अपॉन dt एट t. राइट. अब देखो x ऑफ अल्फा टी, x ऑफ अल्फा टी, ये अल्फा टी है ना. तो हमें इसको कहाँ पे पुट करना है? x में पुट करना है. सो इट विल बी अ वेक्टर at alpha t 2 times x2. So x2 of t minus b minus, sorry, comma, minus 2 times x1 of t minus a. Right? So जब आप इसको इक्वेट करोगे, अल्फा डॉट ऑफ टी इट इज इक्वल टू x ऑफ अल्फा t. तो आपको क्या मिलेगा? राइट इट डाउन अगेन. इट इज dx1 अपॉन dt dx2 upon dt, right? Alpha of t to x2t minus b minus 2 x1t minus a. So equating, you will get dx1 upon dt. It is 2 x2t minus b and dx2 upon dt. It is minus 2 x1 of t minus a. What it is? It is nothing but system of फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो अब हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है. So to solve this system, let us consider first out of these two equations, dx1 upon dt. It is equal to 2 x2t minus b. तो अब हमने क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो क्या मिलेगा आपको? d2 x1 अपॉन dt स्क्वेयर एट t. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 dx2 अपॉन dt. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. लेकिन dx2 अपॉन dt आपके सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू लिखा हुआ है. क्या है ये? 2 टाइम्स माइनस 2 x1 ऑफ t माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 x1 ऑफ t और ये माइनस 4 इंटू माइनस ए, सो प्लस 4a. तो बेसिकली विल गेट d2 x1 upon dt square plus 4x1 of t, it is equal to 4a. ये क्या है? It is non-homogeneous second order ODE, ordinary differential equation. तो इसको there are several methods to solve it, है ना. Method of variation of parameter. तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा. एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो एम का वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस 2i. तो उसके लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा? और फिर क्योंकि राइट साइड में आपको क्या है? 4a. तो आप क्या लिखोगे? जो भी वट एवर यूल राइट, यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा? x1 ऑफ t इट विल बी इक्वल टू a प्लस c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t. ओके, अब आपने क्या करना है? इसको आपको डिफरेंशिएट करना है. राइट. सो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन. सो विल गेट dx1 अपॉन dt. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. आपको मिलेगा माइनस 2 c1 sin 2t प्लस 2 c2
कॉस 2t। लेकिन आप देखो व्हेन यू सी, आपको यहाँ पे देखो, हाँ, dx1 अपॉन dt, बट ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। dx1 अपॉन dt ये क्या है, 2 टाइम्स x2 ऑफ t माइनस b। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको रिप्लेस करेंगे 2x2 माइनस b से, तो हमें क्या मिलेगा, 2x2 ऑफ t माइनस b। ओके, इट इज -2 c1 sin 2t प्लस 2c2 cos 2t। अब 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 विल गेट कैंसल्ड आउट और डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, you will get x2 of t minus b will go on the right hand side and you'll have b minus c1 sin 2t plus c2 cos 2t। ये आपका मिला x2, है ना। तो देखो, अब आपको मिल गया x1 और x2 का वैल्यू। तो अल्फा ऑफ टी क्या था, x1 ऑफ टी कॉमा x2 ऑफ टी। तो अब x1 ऑफ टी हमारा क्या था, a प्लस c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, कॉमा व्हाट इज x2, b माइनस c1 sin 2t प्लस c2 cos 2t। तो ये हमें मिला इंटीग्रल कर्व। तो ये हुआ आपका लोकल पैरामीटराइजेशन। अगर आपको पूछा है ग्लोबल पैरामीटराइजेशन, है ना, सो वी विल फाइंड ग्लोबल पैरामीटराइजेशन बाय पुटिंग अल्फा ऑफ 0 एज a प्लस आर कॉमा b, है ना। तो अल्फा ऑफ 0 मतलब क्या मिलेगा आपको, x1 ऑफ 0 आप पुट करो a प्लस आर और x2 ऑफ 0 पुट करो b। लेकिन x1 ऑफ 0 ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस c1 बिकॉज cos ऑफ 0 इज 1 एंड sin ऑफ 0 इज 0, so you'll get a प्लस आर। और यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा b sin 0 0, इसलिए सेकंड टर्म विल वैनिश और आपको मिलेगा प्लस c2, इट इज इक्वल टू b। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट c1 एज r and b will cancel out, so c2 will be equal to 0. So putting these values of constant in alpha t, we will get alpha of t is equal to a, c1 क्या है आपका r प्लस r cos 2t, c2 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b1 माइनस c1 इज r sin 2t। ये हुआ आपका ग्लोबल पैरामीटराइजेशन। ओके, यहाँ तक आप करोगे तो यू विल गेट 5 marks। आगे क्या करना है आपको, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड कर्वेचर। ओके, तो कर्वेचर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, Kp इज इक्वल टू अल्फा डबल डॉट टी नॉर्म एट अल्फा टी डिवाइडेड बाय नॉर्म अल्फा डॉट टी स्क्वायर। लेकिन एन क्या लेते हैं हम, ओरिएंटेड बाय आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ पे आपका चेंज होगा, इनवर्ड रहा तो नेगेटिव लेते। सो अल्फा डबल डॉट टी अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा डॉट टी स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन नॉर्म ग्रेडियंट ऑफ। अब यहाँ पे जो भी दिए आपको सब कुछ फाइंड कर लेना है ना। अल्फा टी क्या है आपका, ए प्लस आर कॉस 2t और ये b माइनस आर साइन 2t, ये है आपका अल्फा। तो अल्फा डॉट क्या मिलेगा, अल्फा डॉट टी ये मिलेगा आपको -2r साइन 2t और -2r cos 2t। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ अल्फा डॉट टी स्क्वेयर, है ना। तो ये मिलेगा आपको 4r स्क्वेयर साइन स्क्वायर 2t
प्लस 4 स्क्वायर 4r² cos² 2t। तो टेकिंग 4r² एज कॉमन, sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4r² इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4r²। अब आप निकालो अल्फा डबल डॉट टी, है ना, तो ये क्या मिल जाएगा, -4r cos 2t और माइनस, वापस से डेरिवेटिव लोगे तो ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4r sin 2t। ये हुआ अल्फा डबल डॉट, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने, है ना, सो वो अपने हमने पहले निकाला, राइट। लेट मी रिकॉल ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये क्या था, 2x1 माइनस ए और 2x2 माइनस बी। तो हमें इवेलुएट करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट अल्फा टी, राइट। अब देखो अल्फा टी, ये x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। सो 2x1 क्या है, a प्लस आर कॉस 2t माइनस ए, कॉमा 2 b माइनस आर साइन 2t माइनस b। So these constants will cancel each other. So you'll have 2r cos 2t and minus 2r sin 2t। अब इसका क्या लेना है आपको, नॉर्म। तो नॉर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4r² cos² 2t प्लस 4r² sin² 2t। So 4r², it will come out of the square root, it will become 2r, and square root under the square root sign, you will have cos² 2t plus sin² 2t। तो ये क्या हो जाएगा, 1। सो इट इज इक्वल टू 2r। तो जो कुछ भी आपको लगने वाला था, एवरीथिंग इज विथ यू। तो आप वापस जाओगे कहाँ पे, के अल्फा। सो के कॉम्पोजिशन अल्फा टी, ये हमने क्या लिखा था, अल्फा डबल डॉट टी, norm of alpha dot t square, gradient of f at alpha t divided by its norm, right? So we have alpha double dot t as minus 4r cos 2t 4r sin 2t अपॉन, है ना, ये क्या मिला हमें, आई थिंक वी हैव गॉट इट एज 2r अल्फा डॉट टी। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर। ओके, लेट मी नो बैक। हाँ, 4r² मिला था हमें। क्या है ये, 4r²। और ग्रेडियंट ऑफ एफ एट अल्फा टी क्या था, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट अल्फा टी इट इज 2r cos 2t minus 2r sin 2t अपॉन नॉर्म ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है आपका, 2r। ओके, तो आपके न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 2s are 8, 1/8 r³। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में ये होगा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, -8r² cos² 2t, then again -8r² sin² 2t। So 1/8 r³ as it is. Take this -8r² out. Inside you will have cos² 2t plus sin² 2t। So यहाँ से आपको मिलेगा माइनस, एंड ये हो जाएगा एक कैंसिल, आपको मिलेगा -1/r, और ये आइडेंटिटी आपका 1। सो यू हैव गॉट इट एज 1। सो दिस इज योर कर्वेचर k of f of t, or you can say k at p where p belong to c।
तो अगर ये देखो आउटवर्ड नॉर्मल था, अगर आप इनवर्ड नॉर्मल लेते तो आपका आंसर आता 1/, यहाँ से आपको यहाँ पे भी माइनस मिलता था। ओके, तो यहाँ तक के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 और 8 मार्क्स, राइट? So we'll see one more example, and this could be the last example. It is first question of your exercise 10. So let, very simple, it is asked for 5 marks or 4 marks. Let alpha of t is equal to x1, sorry, not x1, xt, yt. ये क्या है आपका? It is already given to be a local parameterization of oriented plane curve C. So we have to show that K composite alpha, it is x dot y double dot, not dot, second derivative prime, y prime x double prime upon x prime square y prime square raised to 3/2. ये हमें प्रूफ करना। ओके, वेरी सिंपल सोल्यूशन। अल्फा ऑलरेडी क्या दिया आपको? इट इज गिवन टू बी अ लोकल पैरामीटराइजेशन। लोकल पैरामीटराइजेशन मतलब ये क्या है? इंटीग्रल कर्व है किसका? टेंजेंट वेक्टर फील्ड एक्स का। दैट मीन्स व्हाट? अल्फा डॉट ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ अल्फा टी, राइट? अल्फा डॉट कैसे मिलेगा आपको? अल्फा टी, सेम सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। एक्स डैश ऑफ टी, वाई डैश ऑफ टी, फिर से ये क्या होगा? अल्फा ऑफ टी ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कोऑर्डिनेट एट अल्फा टी, है ना? और फिर वापस से फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू से फर्स्ट कोऑर्डिनेट विथ नेगेटिव साइन बीइंग इवैल्यूएटेड एट अल्फा टी। ये कैसे मिला आपको? ये मिला कैसे? इसको हमने -π/2 से रोटेट किया, किसको? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? दिस विल इम्प्लाई दैट इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट dabby upon dabby y alpha of t and y dash of t minus dabby upon dabby x alpha of t, ये आपको मिला सिस्टम। So now you have formula for curvature. It is what? Alpha double dot t norm alpha t upon norm alpha dot t square. So take n as gradient of f upon its norm, है ना? So देखो gradient of f at alpha t हमने देखा, है ना? We have already seen that. क्या है ये? अल्फा टी dabby upon dabby y at alpha t minus dabby upon dabby x at alpha t. So from star, right? dabby f upon dabby y alpha t, ये क्या हो जाएगा? अल्फा टी, ये हो जाएगा आपका, नहीं ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना, सॉरी, ग्रेडियंट है तो हम जैसा लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है? ये आपका फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हियर इट इज माइनस वाई डैश, है ना, ऑफ टी, और ये क्या है? इट इज एक्स डैश ऑफ टी, राइट? ये कहाँ से मिला आपको? फ्रॉम स्टार। सो इट्स नॉट, इट विल बी माइनस वाई डैश स्क्वायर, नॉट माइनस, ये प्लस हो जाएगा जब आप स्क्वायर लोगे, रेस्ट टू 1/2, दैट इज एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर रेस्ट टू 1/2। ओके, और नॉर्म ऑफ अल्फा डॉट टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पहले से, तो ये एक्स डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई डैश ऑफ टी स्क्वायर, है ना? एवरीथिंग इज विथ यू नाउ, so just put it in the formula.
you will get K composition alpha T is equal to, repeat it, okay, so it is a vector at alpha T, x double dash, y double dash at T divided by, हमने अभी ये देखा, x dash of T square plus y dash of T square and अल्फा डॉट टी, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई डैश ऑफ टी, एक्स डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एक्स डैश ऑफ टी स्क्वेयर प्लस वाई डैश ऑफ टी स्क्वेयर रेस्ट टू 1 अपॉन। सो न्यूमरेटर में आपको होगा डॉट प्रोडक्ट एक्स डबल डैश इंटू माइनस वाई डैश, फिर प्लस वाई डबल डैश एक्स डैश डिवाइडेड बाय ये 1, तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश स्क्वेयर रेस टू 1 + 1/2 3/2। सो ये मिला आपको, राइटिंग दिस सेकेंड टर्म एट फर्स्ट प्लेस, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश डिवाइडेड बाय एक्स डैश स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर रेस टू 3/2 के composition alpha है, and that is what you wanted to। तो ये 3 से लेके 5 मार्क्स तक आपको पूछा जा सकता है। वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड द प्रॉपर नोटेशंस। So with this we complete here. If you have any doubt from chapter 1 to 10, please ask. Thank you and do watch the videos. पढ़ाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।